Hello friends, welcome to our new video. If you guys are new to our channel or if you did not subscribe to our channel yet, then please go and subscribe our channel and hit the bell icon as well so that you can get the notifications of our new videos. Okay, so let's see the today's problem. Okay, so the today's problem is colorful boxes. Okay, so we have given a problem statement. The problem statement is there are n boxes and ci denotes the color of the ith box. Okay, and from this row Bob can choose k consecutive boxes and get them, but Bob wants to get the maximum possible distinct colors of boxes. Okay, and we have to print the maximum possible number of distinct colors in the boxes he gets. Okay, and in the input, in first line we have given the two integers, that is n and k, and the second line we have given the n integers, that is c1 c2 up to cn, that is for colors. Okay, and here we have given some constants, and we have to print the maximum possible number of distinct colors in the boxes Bob gets. Okay, and here we have given some sample inputs and their outputs. Okay, okay, okay. So let's try to code this problem. Okay, so first I will write scanner class to take the input from the user. Okay, so here we'll write scanner. Sc equals to new scanner system dot in okay. After that, here you can see that in first line we have to take the two integers. Okay, that is okay, n and k. So we'll write integer n equals to sc dot next int. Okay, after that we'll take another number as an input, that is k equals to sc dot next int. Okay, now we have taken the two numbers as an input, and in second line we have to take one array to store the colors. Okay, so here we'll write integer, and let's suppose we'll give the name for array, that is a equals to new int, and in this we'll pass the n. Okay, we have declared one array. Now we have to write the for loop to take the array input, array elements input. So we'll write for integer I equals to 0, then I is less than n, and I plus plus.
Okay, after that, in this for loop, simply we'll write array of I equals to sc dot next. Okay, now we have taken the array elements. Okay, now what we can do, we'll declare the one hash map to store the first we'll store the frequencies of colors. Okay, so we'll write hash map integer. Okay, integer comma second is also integer, will key, and that is key and value. Okay, and we'll give the name for this hash map. Okay, equals to new hash map okay, we have taken one hash map. Now here we'll write for loop to store the frequencies of colors. Okay, so we'll write integer I equals to 0, then I is less than k, I plus plus, inside this we'll write map dot put, and inside this we'll write array of I comma map dot get or default. Okay, and inside this method we'll pass array of I, then comma, and after that we'll write the 0, and after this bracket we'll write plus 1. Okay, okay, so by using this method we can store the frequencies of number. Okay, okay, in array. After that, what we declare one variable, that is max, and we'll initialize it to 0. Integer max equals to 0. Then we'll write one for loop for integer I equals to 0. Sorry, here in this for loop uh, I should run till k, that is for I equals to, we'll write k
and I is less than n I plus plus. Okay, after that, in this for loop, simply what we can do here, we'll write map dot put then array of I minus k, then comma, and we'll write map dot get, and in this function or method we'll write array of I minus k. Okay, map dot get array of I minus k, and will minus 1 from this. Okay, okay, after this we'll write one more condition, that is if map dot get, okay, map dot get array of I minus k equals to 0. If array of I minus k is 0, then what we can do, we simply remove the array of I minus k elements. So if array of I minus k is 0, then we can write map dot remove. Okay, and we'll remove the array of I minus k elements. Okay, so in this we'll write array of I minus k. Okay, okay, after that here we'll simply write map dot put, and in this we'll pass array of I, then comma, map dot get or default. Okay, here map dot get or default array of I, comma 0, and then plus 1. Here as well, again we have store the number of frequencies of a number. Okay, and after this we'll simply find the max. Okay, max number from this. Okay, so we'll write max equals to
we can use math dot max function here, and inside this we'll write max comma and map dot size. Okay. Okay, here we have written the function to find the max from this number of elements. Now here we made some mistake. Here we don't initialize max equals to 0. Instead of the max equals to 0, we need to here we need to write map dot size. We have to initialize max with size of hash map. Okay. Okay, now we have written the code for this problem. Mm, after this, at the end, we'll simply print the max. So we'll write system dot out dot println and we'll print the max. Okay. Okay, so now we have written the whole code. Now we'll try to run this code. So before running this code, here I will write the packages import java.io dot star and import java dot util dot star. Okay. Okay, now let's try to run this code. Okay, now our program is running. System.out.println expected. Okay, println. Here, what we have missed? System.out.println. Okay, this is for. Okay. Here we have made the mistake, that is map, and we have written this we have print this max outside the main class. So we'll हमने ये फिर से मेन क्लास के अंदर ये इसको कॉपी पेस्ट किया. अभी इसको रन करके देखते हैं. Array of I map dot put cannot find the symbol.
Okay. Mm, okay. Okay. We have written this function outside this for loop. That is why this error is showing. So we'll write remove the curly braces from here and we'll give the curly braces here. Now let's try to run. Okay, now our program executes. Okay, now we'll give the input. So the input for our program is here, the first sample input. So first is 7, then 3, then in second line 1 2 1, then 2, then 3, then 3, and then 1, and the output should be 3. Okay, let's see what it output is showing. Okay, you can see that output is showing 3. Now let's run again and let's see for the second input. Okay, so let's click on run again. Okay, now let's give the second sample input, that is first in first line, that is 5 and 5. Okay, and in second line that is 4 4 4 4, then 4 and again 4. Okay, now in this case some output should be 1. Let's see what output is showing. Okay, see, you can see that output is showing 1. Okay, so here our program is done. Now what we can do, let's copy this whole code. Okay, we have copied this code from here and let's try to run. Okay, let's try to run the code here. So we'll paste the whole code here. Okay, okay, so I have pasted the whole code here. Now let's try to run our program here. So simply मैं यहाँ से ये इनपुट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इनपुट में इसको पेस्ट कर देता हूँ. Okay, so okay, so
we'll paste the input here. ओके यहाँ पे इनपुट जो है पेस्ट कर दिया. नाउ अभी इसको रन करके देखते हैं हम. सो रन पे क्लिक किया. अभी यहाँ पे आउटपुट देखते हैं क्या आता है. ओके आउटपुट आ गया है. लेट्स सी. ओके यू कैन सी दैट output is showing 3, which is correct. Now we'll give this third sample input and we'll check for this. Okay, so we'll copy this input and let's paste it here. Okay, so I have pasted the input here. Okay, now let's try to run the code in this for this sample input. The output should be 4. Okay. Okay, now let's see. Okay, you can see that output is showing 4, which is correct. Okay, now let's try to submit this code. Okay, so click on submit. Now our test cases are running. Let's see all the test cases will pass or not. Oh, okay, you can see that only two or 2 to 3 test cases are passed and 3 test cases are failed. Okay, so what error is showing? It is showing memory limit exceeded. Okay, so for this type of error, simply what we can do, you can use instead of scanner class, you can use the buffer reader. Okay, because scanner class takes more memory than buffered class. Okay, so you can use here buffered class to take the input from the user. Okay, so let's try to using a buffered reader. Okay, so simply what I can do, I'll comment out this input. Okay, so here. Okay, so here I'll write buffered buffered reader एंड उसको नाम देते हैं BR. ओके इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर और इसके अंदर हम लिखेंगे न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर. इनपुट स्ट्रीम रीडर. ओके इनपुट स्ट्रीम रीडर और उसके अंदर हम ब्रैकेट में लिखेंगे सिस्टम डॉट इन. ओके ये हमने बफर रीडर ये लिखा. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक स्ट्रिंग एरे लेना पड़ेगा क्योंकि जब भी हम बफर रीडर यूज करते हैं तो कोई भी इनपुट लेने से पहले हमको एक एरे लिख क्रिएट करना पड़ता है. सो विल राइट स्ट्रिंग str equals to br dot readline
br dot readline dot split और एक empty यहाँ पे एक डबल कोट्स पास कर देंगे ब्रैकेट में। ओके, सो बफर्ड रीडर जब भी हम यूज करते हैं तो कोई भी इनपुट लेने से पहले ये लाइन हमको कंपलसरी लिखना पड़ता है। Without this line, we can't take the input from the user by using buffered reader. Okay. Now we'll write integer n equals to. Okay. So in scanner class, we write scanner dot next int और next float जो भी रहेगा वो लिखते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। अभी बफर रीडर में हम क्या लिखते हैं, इंटीजर डॉट पार्सिंट लिखना पड़ता है इनपुट लेने के लिए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्सिंट ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो स्ट्रिंग पास कर देंगे और इस जो हमने क्रिएट किया था और उसके अंदर हम पास करेंगे serial zeros. Okay, now we'll take another variable that is k, integer k equals to, so we'll write integer dot parseInt, and inside this we'll pass str string array और यहाँ पे इसके पास कर देंगे 1। अभी ऊपर यहाँ पे हमने 0 पहले ये किया, अभी उसके बाद 1 पास कर देंगे। और अगर और कोई इनपुट रहेगा, मतलब और कोई वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम सिंपली 1 के बाद 2 पास कर देंगे, फिर 3, फिर 4, लाइक दिस हम इसमें पास कर देंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, 2 नंबर तो हमने ले लिए, अभी हमको एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर और उसको नाम देते हैं a इक्वल्स टू न्यू इंट और इसमें n को पास कर देंगे। ओके, ये हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया। अभी हमको ये एरे एरे के जो भी एलिमेंट्स है वो यूजर से इनपुट लेना है। तो अभी हमने यहाँ पे पहले ही देखा था, अगर कोई भी हमको यदि इनपुट लेना है तो ये लाइन हमको कंपलसरी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें अभी एरे के एलिमेंट सभी इनपुट लेना है, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन यहाँ से कॉपी करेंगे फिर से और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लिखेंगे एरे के इनपुट्स यूजर से लेने के लिए, एरे एलिमेंट्स। ओके, सो फॉर integer I equals to 0, then I is less than n, I plus plus। ओके, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, और इसमें हम एरे के एलिमेंट्स इनपुट लेंगे यूजर से। ओके, सो फॉर लूप के अंदर अभी हम लिखेंगे एरे ऑफ आई इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्सिंट, इंटीजर
डॉट पार्सिंट। ओके, और इसके अंदर हम ये जो स्ट्रिंग है, str जो एरे, वो पास कर देंगे, और जो एलिमेंट्स हैं जो आए, इसको पास कर देंगे इसके अंदर। ओके, सो ये हमने बफर रीडर क्लास लिया यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए। ओके, ओके, और जब भी हम बफर रीडर क्लास लिखते हैं, तो बफर रीडर क्लास लिखने के बाद जो मेन क्लास है, अ, अ, तो मेन क्लास में हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ये हमको जब भी हम बफर रीडर क्लास यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए, तो ये हमको कंपलसरी लिखना पड़ता है मेन क्लास में। इसके सिवा हम ये प्रोग्राम मतलब ये रन नहीं होगा। अगर ये हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो ये एरर थ्रो कर देगा। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। बफर रीडर क्लास हमने लिखा। ओके, नाउ ये वाला इनपुट है, तो इसको रन करके देखते हैं ये रन होता है क्या। तो लेट्स क्लिक ऑन रन। ओके, okay, you can see that output is showing 4, okay, which is correct. Now let's try to submit the code, and let's see all the test cases will pass or not. Okay, now the test cases are running. Okay, you can see that now all the test cases are passed. Okay, that's it. Thank you for watching the video. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।